Hi everyone. OPSC ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି solving the PYQs of each subject is very important, right? Is that much of important, right? Doing the revision and going through the concept as well. So after going through the concept and having clarity of the syllabus, every aspirant, irrespective of the stages of preparation, must go through the PYQs. So today in this session, I will go through some of the PYQs of the OPSC that related to the geography as a GS. The first PYQ, here you can see the OPSC PYQ subject geography 2015. So let's see the first one. Here is the first question is that, right, that Khajiyar Lake is associated in which? That means this one is found where? Whether this is Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Odisha, JNK, where? So this kind of some factual questions are also coming started. They have started asking this kind of what factual questions. So these questions could be solved through having the basic ideas. अगर किसी ने somebody has prepared the ओडिशा तो मतलब पढ़ी ठीक ठाक से पढ़ी तो से जानी कि यार ये तो ओडिशा रे नहीं ये भलिया किछि दैट मीन्स जदि आमे कहबा से जानी कि ओडिशा रे ये भलिया किछि लेक नहीं तो ये कैंसिल हो जो ना तमिलनाडु जदि से पचे कि ना तमिलनाडु तो किछि खाजिया टाइप रो एमती नहीं ये तो नॉर्थ इंडियन टाइप रो वर्ड सुना जाउछि तो यही जीवो जेएनके रे तमी एमती सुन हिमाचल प्रदेश कुड बी द आंसर सो दैट वुड व्हाट हिमाचल प्रदेश इज द आंसर दैट हियर एठी तो मध्ये है डालाउजी जो अछि हमरो राइट the Khajiyar Lake is near to the Dalhousie. That is the Chamba sector. जहाँ को हम कहते हैं is situated in the Khajiyar in the Chamba district of Himachal Pradesh, India. It is stated at the height of around 1951 meter above the mean sea level. Dalhousie and Chamba towns भितर तुमको देखा जाओ. So this is the answer of and explanation जोटा को हमें discuss करें. Next question को जीवा and before that you are having आम भैल्यू एडिशन्स आपको देचु कि भैल्यू एडिशन को लेक कौटी अच्छी ये गोटे लेक भैल्यू एडिशन दिखाई आपको देखीदे कौन हम कि कौटी कौ लेक अच्छी आमर गोटे क्लारीटी आसीज राइट गोटे क्लारीटी आसीज कि हाँ दिज आर द लेक्स तो आमको गोटे क्लारीटी आसीज एंड इट वुड बी क्लीयर राइट तो ये आम देखीदे नेक्स्ट को जीवा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिकॉय एंड सुहेली आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय whether it is 6 degree 7 degree 8 degree 9 degree right the 6 degree channel ami janiche that is the Sundaland and Great Nicobar se habani 7 degree channels is somehow that is also includes to the what I would say would be so 8 degree channels that means India and Maldives so this is also there so 7 degree channels is not there so cancel it 9 degree channel is this is the answer so this is what the answer so 9 degree channel is the channel that Indian Ocean between the Lakshadweep capital of what that is Lakshadweeps of Kalaipani and the Sulai Park so this would be the answer right the Minicoy that separates the what Minicoy and the Sulai that island so these are the small islands here you can see this is the what 8 degree channels Minicoy is here the capital and which is proximity or away from the Thiruvananthapuram then Sulai is here so here is Minicoy here is what Kalpeni and Sulai so these are the Cardamom also there right Amendiv is here Bitra is there so this is how then KBR National Park is located where whether this is Hyderabad Nainital Darjeeling Sundarban where so this is what Hyderabad so this is what here Hyderabad so here you can see it has speakers like this was also in news right why this one also in news that it but Kasu Brahmananda Reddy National Park is a national park located in the Jubilee Hills in Hyderabad Telangana India and here is the location you can see right so this is how this is been explanation रे ए मध्य हमें ऐड को देजु के ए आरो किछि पापीकोंडा नेशनल पार्क्स कथा नै जो हियर राजीव गांधी कथा नै जो से वेंकटेश्वर नेशनल पार्क्स कथा नै जो आंध्र प्रदेश रही एंड से भली हमें दे देछु जेमती व्हाट दैट इज मुरुगा भानी नेशनल पार्क्स कथा नै जो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी कथा नै जो महावीर हरियाणा that is Harina right that is also there so these next हम देखिबा
from where the Narmada river origins. Narmada river obviously basic जिनस तो मैंने पढ़ी थी वो है ना. तो से कही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सातपुड़ा, this is eastern central part of Satpura, this is southern slope of Satpura, none of them, right? That means हमको सारी आड़े सातपुड़ा 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 तो देखा जाउची. whether this is north eastern part, whether this is central part of Satpura के central part तो देखा जाउन कोठी न कोठी, तो that would be what, so this would be what, north eastern part रे हमको देखिया को मिलिबो. And the Sadol region, Sadol is a district, so Sadol region of Madhya Pradesh, Narmada from the Narmada Kund रो origin हेची, right? origin from the Narmada Kund, ये तुमको देखा जो नर्मदा रिवर जोटा आम कहले, the largest west flowing river जोटा आम कहले, right, in the India, the Narmada river origin from the that is north eastern part of Satpura. Done. तो आम कह मध्य प्रदेश and गुजरात है कि इधर जाउची. And the last questions आज रे में डिस्कस करिबा, that is Satluj river tributaries of what. देखो ये बहुत न्यूज रे अछि, खास कर आम कहे बिकॉज ऑफ द इंडस वाटर ट्रिटी जो आमर बट ऑपरेशन सिंदूर पर ये तो काफ़ी न्यूज रे अछि ना. तो जदि आम कह ये इंडस वाटर ट्रिटी काफ़ी न्यूज रे अछि तो ताकू तो आपको तो हमें देखिया पड़ियो, राइट? आपको तो देखिया पड़ियो, काहू ना काहू तो देखिया पड़ियो. सो दिस वुड व्हाट सतलुज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली तमें जानिछ. तो सतलुज व्हाट, दैट इज हिंदूज रिवर, यस, दैट वेदर इज बी इज एल एम चरप ना, इज अ व्हाट, Indus, that means Hindus जाओ कमी कोच, right? That is the Indus river, right? Here would be, तो ये इंडस एच ही जाइए आपको करेक्ट कर दो, भाई हिंदू से ही जाइए है ना, एक करेक्ट कर दो, राइट? सो दैट वुड बी देयर. तो इंडस रिवर, तो ये शिपकिला पास देखी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर से शिपकिला पास एक इंडिया रे एंट्री करूची. एंड दिस इज द 5 रिवर जोटा कहा जाए कि सतलुज, बीस, रबी, चेनाब, झेलम ये सब आम देखीदेवा. तो ये जो रिवर्स गुड़ाक दैट मीन्स हम जी थीमेटिक बेस्ड कहवा कि दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द रिवर, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पासेस, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द व्हाट आई वुड से चैनल जोटा हम देखले. सो दीज आर द एरिया जोठू से माने पचारुछंत, राइट? सो विथ दिस वी विल एंड द सेशंस, राइट? थैंक यू एवरीवन.